Hello and welcome to Cafe Mutual YouTube channel. Friends, the average AUM of SIF has crossed the AUM mark of 2000 crore within a month. So currently there are over 1600 distributors selling SIFs. Clearly the newly launched asset class has been gaining traction among investors as well as distributors. To talk more about SIFs, today we have invited Jatinder Pal Singh or JP, CEO of ITI Mutual Fund. JP has over 25 years of experience in the MF industry. Recently, Diviniti SIF by ITI Mutual Fund has launched its equity long short fund. So, without wasting time, let me welcome JP to the show. Good afternoon, JP, and welcome to the show. Thank you. Greetings to you, Nishant, and your team, and to all your subscribers. Thank you for having me on the show. Great. So, JP, ITI Mutual Fund has recently launched Diviniti SIF. So, tell us about the main objectives of Diviniti SIF and how will it be different from others? Sure. So, Shitant, a very vital question and very important, especially in context of the so early nascent stage of this specialized investment product. So, just to tell you little background, look, in India, more than 99% right, Mm, of the funds being managed are in long side. mm, So, whether it is mutual fund, which is naturally a long product, and maybe partly here and there, we do use hedges only in mm, bass kind of categories. In most of the PMS, whether in most of the AIFs, mm, they are long products. So long short category does exist, but and the AUM is not at all large, mm, and that exists only in AIF space, mm, and where the minimum investment amount is 1 crore rupees and so on. So now what has happened? There was a consultation paper which came in earlier, and in the month of February and March 2025, mm, the circular came, defined a new platform, gave all the details of a new platform called Specialized Investment Funds, which is an inherent part of mutual fund itself, but with some differentiation. So that differentiation, I'm sure we'll talk over on the product as we go along. But main objective of the Divinity Safe, main objective of the long short fund is to help investors bringing a differentiated strategy which will help them grow steadily in all kinds of market. Look, markets are volatile. Market conditions are unpredictable. Right? So this SIF gives them a new product class where there's flexibility and innovation, whereby mm, managing downside effectively can be taken care of. mm, So main objective will be to help the investor grow steadily in all kinds of market. mm. Okay. And about Divinity SIF, JP, so how will it be different from others? Sure. So, first of all, to tell you, there are hardly any launches which has happened. Everything, the birth of the whole launches are taking place as we are talking. So maybe everything started about 5, 6 weeks back, and we are in the first batch of those launches. So we got approval about 3, 4 months back. I delayed my launch by a month or so, reasoning that look, the distribution community was still to be warmed up. They were preparing to understand, being more aware, so that the correct positioning of the product can be understood and placed in the investor's portfolio. So to tell you how it can be a little different, they're different. It depends upon various aspects, but most vital one that comes to my mind is that ITI House itself has been managing long short product Mm, for last almost 7.5 years plus. So mm, we in our and that is in the AIF, mm, ITI long short AIF category 3. So the fund manager for that is Mr. Rajesh Bhatia, who has been 18, 19 years in the long short category. Right? When the long short did not exist, he was used to work in the hedge funds. So last 18 years, out of the total, more than 30 years of his experience have been the long short category. This products will require both talent, skill, which is one part, and secondly, it will require experience also over multiple cycles. So what we can assure you is that at our house we have talent existing, which is, and SIF will be a natural progression of what we have been managing for such a long time. And at the same time, we have also added talent in order to be ready for the scale that we may get from this launch. So in terms, and naturally, when I'm saying this, everything is prepared.
the discipline part, the process part, time tested, and in theory, everything is prepared and ready to be used. We are very excited for this launch, and I think the key differentiation factor in summary will be the talent and the experience. ओके, तो जेपी, जैसा आपने बताया कि आईटीआई ग्रुप को पहले से एक्सपीरियंस है इस लॉन्ग शॉर्ट फंड में, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न स्ट्रैटेजी आपका बहुत पॉपुलर भी है अमंग इन्वेस्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो कौन कौन सी की लर्निंग्स है जो आप वहां से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे? जी, तो क्या मैं आपको एक स्लाइड दिखा सकता हूँ इसके बिल्कुल बिल्कुल। अंदर? जी, तो क्या ना थोड़ा समझना थोड़ी सी इजी हो जाएगा, ताकि विजुअली, राइट, एंड इट विल ऑल्सो reinforce what I am telling. So coincidentally, as I talk with you, Nishant, I think we have a product launch going on today. It's the first day of the product launch of राइट। our Diviniti Equity Long Short Fund, and it will run for 2 weeks. So I'll just take you across to the question that you put. So the we talked about how it will help and so on. So I am just taking you across the model back testing, and it is based on really what we have done. So the main principle of the long short fund manager is to try and give a balance out the risk in the market, and try and perform with the upside and deliver the returns of the equity markets. So the background is this, that across the world there came a time when when the economies grow, when inflation becomes lower, the interest rates tend to come down, and when interest rate tends to come down, the interest bearing securities interest rate comes down. So post tax, post inflation, there's hardly any real savings for them. And on the other side, same investor cannot be expected to suddenly move from to the equity, because equity carries uncertainty and volatility with it. So this product will bridge that gap, and it will bridge by bringing in the DNA of management. So in theory, anybody can say, look, I'll manage. But in real sense, this product will be like managed with all the in their minds, keeping in mind that the drawdown needs to be kept in mind, the protection of the investor needs to be, money needs to be there. So I'm not guaranteeing anything. I'm saying the way of management, the psychology of management of the fund manager needs to be like that. So in Long's fund, they are not supposed to manage. They will go by benchmark. They will go across the market cycles. So if market's going down, if going up or going down, they may tend to move beta, but they normally don't move by hedging. So we have the capacity of hedging because we are allowed up to 25% unhedged position and up to 100% hedging, which mutual funds don't have. So if I show you this slide, and you may see 4 bubbles out here. Look, this is what happened in the last year. Last year, after a run of 1.5 years, market started, went into a correction mode. So markets, Nifty were down 14%. This is the last bubble I'm talking about in the slide. And our fund were down 3%. Reason being, from as early as June of 2024, our fund managers in the long short fund started taking early hedging positions, started started managing the portfolio in such a way that whenever the correction happens, the effect will be lower. So go back to the second bubble out here. This is COVID. While people may say, look, COVID is an event, how could we have managed? And markets were down 40%. If you remember, Nifty were down almost 35-40% that time. But there were some early signals, and these early signals are supposed to be caught by long short fund manager. So early signals were as early as November, December, because China got shut down. COVID is a COVID-19, not 20, because the discovery was in 2019. December, the shutdown of USA started happening. Sorry, shutdown of China started happening. So out here what we were doing in the long short fund is we were protecting the capital. We started hedging the portfolio, and whenever the opportunity came later after the fall, we even took some short positions in some of the stocks or sector where we thought is hit by the economy. For example, aviation. For example, in the MFI space, there were stocks which would have taken a hit. So it is a disciplined approach. It comes with experience and talent. So basically this is going to be utilized also in our Diviniti long short fund. The only caveat is in the long short fund category, the SIF category, the regulator has given us permission to take up to 25% unhedged position. That is, if we do naked short,
only after 25% of our portfolio can be utilized for that, which I think is a good, good number to go start with, because somebody may say why not 50 and so on, but I think good number to go with, because this takes care of a, another risk which may be curbed at 25% instead of 50 or 100. So I think this space will evolve. Maybe 50 and 100 may come later, but let us start it at least at 25. Great, great. So you already have well experienced in this market. So shorting may not be a challenge for ITI, for Divinity per se, Yes. compared to. And yeah, and on this slide, Dishant, if you see, all this is managed with, with at 30% of the beta. Hmm. So the Sharpe ratio is double of our benchmark, and the returns given is at 0.3%, Hmm. 0.3 of our benchmark beta. Hmm. Great. So it is not only in theory, it is in practice already, that how this is managed, and I think same thing will be utilized in our Divinity Equity Long Short fund also. Great, great. Good to hear that, JP. So, JP, my next question is about Divinity SIF's first launch, which is Divinity Equity Long Short Fund. So, what's the rationale for this fund, and can you take through this SIP for our audience as well? Yes, sure. So this product we are launching is called Divinity Equity Long Short Fund. Just to tell you first, clarify for our audience that Divinity is a brand name. It is owned by ITI Mutual Fund. The rules set by the regulator is that you need to have a mutual fund license in order to launch a SIF. So, and there's eligibility criteria. We applied, we got the approval, and then you have to launch for schemes. Now, the rule was that the SIF schemes need to be launched under a different brand. Now, maybe the thought process is this, that this carries a little higher risk, but at the same time, the potential of downside protection can only be delivered if unhedged positions can be taken. So, since it's carried little higher risk, though in real sense, what we have seen, the beta is lower, but you should separate the brand. IT mutual fund already exists, which are more long oriented. Considering the psychology of management, considering the philosophy of setup of the products, let there be a separate brand. Like in Maruti, they have Maruti normal range, and then they have luxury range of Maruti called Nexa. So similarly, out here you need to give a different brand. We named it Divinity, coming out of synthesis of two words. One was divine, second was Niti. Niti for governance, ethics, planning, and so on. And divine came from the word of universal wisdom. So we used both the word with DIVIN. ITI became a natural ending word for out there. So what will happen? This is in your e-cash statements, in your mailback services. This will be another scheme, but starting with Divinity instead of ITI. So all mutual funds are supposed to do that, and somebody who wants to come to exercise space will have to take a license of mutual fund, and then according to eligibility criteria, apply for launches. So now the seven total seven schemes are allowed by regulator. So as a start, we took a natural progression that what we have been doing, what my CIO has been doing for last almost 2 decades, and what we have been doing for about 7, 8 years. Let us go start with that. So first product launch is called Divinity Equity Long Short Fund. So this is going to be essentially a equity product, because as per regulation, we need to be 80 to 100% invested. So I'll just put forward the slide on the positioning of the fund. We need to be 80 to 100% invested in the equities. But if you look at the third and last row, what differentiation is this, that we can be up to 100% hedged position. So in case of what we outlook being negative, we can be hedged completely on our book, on our strategic longs. And in case we feel there is opportunity in any market, that can be bullish or bearish market, sliding market, or or structurally any issues with the stock or a sector, we can utilize these shorts or naked short, as they call, or unhedged position, to try and generate alpha. Oblique, we can even try and manage volatility. It's not only alpha generation, it is also managed volatility, which is downside. Right? So both can be utilized. So just to tell you how the product may look like, the product may look like in a positioning. If you look at a mutual fund portfolio, there are
you will find that there are 30, 40, 50, 70 stocks in a portfolio depending upon various portfolio sizes. They are bought, taken delivery, and there will be small to 1, 2, 3, 4% cash positions. But in a long short equity product, we will build a portfolio of medium term 1 to 3 year outlook of good quality stocks, mainly because in the large and mid cap space. Large and mid cap essentially because there are only 230, 240 stocks in the FNO, and out of which liquidity is core in first 130, 140 stocks. So we think the build-up will be mainly in large, mid, and small cap can be bought, but they have to be in filtered through to my strategic long part. So at times we may buy small cap, but not necessarily. So and some portion of it may be tactical long. So generally what we are seeing is that 40 to 70% may be in strategic longs. So we are putting an average of 55% for simulation purpose, because we have to fix one number and we are going with a number of 55. That is what we think will be the average, and rest will be used tactically. So we'll naturally use derivative positions, futures to add. So tactical can be like, look, and second thing is hedges. If we think for reasons where market is overvalued, may slide down and so on, may look like we'll hedge a portfolio. So this is a very proactive situation. This is not. So it may be that the fund manager may have to do it early, but they have to follow the discipline. And lastly, take positions through shorts which are like unhedged positions. So the product may look like strategic longs plus tactical long minus hedges and minus shorts. So net position will be accordingly what you see on the slide, A and minus B and minus C. So somebody was asking me tactical shorts, why? So there are many situations in the market where, for example, let's say we have a position of 35-40% in financial sector. Okay. And there is a RBI policy coming, there may be a Fed policy coming, there may be some situation coming, and we think, look, this product essentially is risk management product, trying to give you returns, but giving you least volatility. So we may try and understand, kind of predict the policy. I'm not predict in that sense, but in outcome of the policy. So and depending on probability, we may want to hedge a portfolio out of 35-40%, maybe 10-15% hedge. Or we may want to even add 5-7%. We may add through banking on financial index. So whichever way we think we can add, and the strategic positions are more long-term oriented. They are just like long portfolios, and tactical positions maybe for 1, 2, 3, 4 months. Just for short-term rollover every month. So over a period of time, we have used processes for managing this. This is a disciplined way. Rather, if I can tell you, there is more deep thoughts which go into taking these shorts or hedges. It is not that anybody can do just like that. Fundamental analysis is done, and then you need to take technicals are utilized as tools, and then you need to take positions accordingly. This is not that just because I'm saying unhedged or we are seeing hedges. Fundamentally, you don't delve into the market stocks or index. We have to do it. Rather, we carry larger responsibilities when we are shorting or the market. So that is how we look at equity part. This is how we are going to manage. So just to tell you, depending on situation, the range may differ. So while it is called equity long short, this may live dual life. In a normal bullish market where we think visibility is high, secularity is there in terms of growth, we will see, maybe we may not see any shorts. Until unless we may find some stock specific or some event specific we want to hedge. So it may just be that 50, 60, 70% of the portfolio is in strategic position, rest is in tactical long. But in a bearish market, the first column, as you see, so 55% invested, we need to be invested, right? Because this is equity portfolio and 80% need to be invested. Rest will be in debt, money market. So that money market part will earn us money. And if we think market looks bad, outlook is not good, then we will hedge it. So even hedge will carry arbitrage benefit for us. So now 100% of the portfolio is earning you something like overnight. And if we go short, that depends upon various aspects. So depending on the outlook of the market,
we will change our position. Sometimes maybe more towards long, sometimes mid segment, and sometimes hedging the portfolio for any downside protection, as I told you earlier and showed you in the slide. But essentially, the essence will be of equity, but we will be more fleet-footed. The flexibility is there to manage it in various conditions through the hedges and through the unhedged positions. ओके, सो जेपी, आपको क्यों लगता है कि दिस इज वेरी राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एसआईएफ्स? Uh, uh, Nishant, first on the let me if we have been very serious in my presentation, let me bring the humor. पहले ये लगता है क्योंकि रेगुलेशन अभी आया है, हम तो पहले भी ले आते हैं, लेकिन रेगुलेशन क्लैरिटी आई, वी सैट विद सेबी, एमफी एंड सो ऑन, एंड नाउ वी आर रेडी फॉर लॉन्च. लेकिन इट इज वेरी कोइंसिडेंटल आपने जो क्वेश्चन पूछा, क्योंकि दुनिया में शायद, देखिए, हम आपको मेरे को इतने इतने समय हो गए हैं, मेरे को 3 दशक हो गए हैं इस मार्केट में, शायद इतनी वॉलेटिलिटी हमने कभी नहीं देखी. 2018 से अगर मैं आज पकड़ लूं, जस्ट प्री कोविड एंड कोविड, ये 7 साल 8 साल की जो बात कर रहे हैं, मे बी ये 15-20 साल की वॉलेटिलिटी है, और एक तरफा भी नहीं चल रही है. किसने सोचा होगा कि यूक्रेन, 3.5 साल इस बात पुरानी होगी, यूक्रेन में एक वीकेंड रशिया जाएगा, और लोगों ने कहा कि 1 हफ्ते 1 महीने में सब वॉर हो जाएगी. आज 3.25 साल हो चले हैं, इट्स स्टिल गोइंग ऑन. इज दैट, मतलब अपनी डी डॉलराइजेशन जो हमने देखी लास्ट ईयर, राइट, तो डॉलर की वैल्यू अगर हम किसी को कहते हैं कि 10% डॉलर डेप्रिशिएट कर जाएगा, लोगों को हाहाकार मच जाता. वो हो चुका लास्ट ईयर, एंड उसके इफेक्ट्स भी हैं. चांदी सोना के मार्केट में आपने देखा उसके इफेक्ट्स कितने पॉजिटिव रहे हैं ऑल्टरनेट के हिसाब से, एंड सो ऑन, राइट. जियोपॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक वॉर्स, ये एंड मतलब बाइपोलर वर्ल्ड, ये वॉलेटिलिटी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है. तो आपके पोर्टफोलियो में इसकी पोजीशनिंग बैलेंस आउट करेगा. तो सिचुएशनल भी करेक्ट है, राइट. एंड अगर हम सिचुएशन भी छोड़ देंगे, हो सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज सुधर जाएं, जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो जाए, तो भी कहीं पे ये प्रोडक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिसको कम रिस्क लेनी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि आपको लॉन्ग शॉर्ट फंड वो आपको प्रोवाइड कर सकता है कि आपको मार्केट पार्टिसिपेशन भी मिल जाए एंड मार्केट में आपकी वॉलेटिलिटी भी कंट्रोल हो जाए थ्रू लॉन्ग शॉर्ट फंड्स. Okay. So, JP, many MFDs want to understand how is this SIF different from arbitrage funds and balance advantage funds offered by mutual funds? जी, वाइटल क्वेश्चन. आई थिंक जिस स्टेज में आपको मार्केट हम लॉन्च कर रहे हैं, ये आपका बहुत ही सही और सिचुएशन के हिसाब से एकदम सही प्रश्न है. सो तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. मेनली मैक्रो साइड में 2 तरह के लॉन्ग शॉर्ट फंड्स होंगे. एक वो जो जिसे हम डायरेक्शनल फंड्स कहते हैं, जैसे कि हमारा वाला जो हम लॉन्च कर रहे हैं, तो मोमेंटम भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ग्लोबली उसको डायरेक्शनल फंड्स कहा जाता है. तो उसमें क्या है कि उसमें अपसाइड पार्टिसिपेशन की क्षमता ज्यादा है. ओके. एंड दूसरे फंड्स होते हैं जिसको कि मतलब मोर इंडिया में मैं जरा सुन रहा हूँ वर्ड, जिसको वर्ल्ड में एब्सोल्यूट रिटर्न कहते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न दुनिया में कुछ और कॉन्टेक्स्ट में भी कहा जाता है. लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न यानी कि जैसे उदाहरण स्वरूप आपने इंडिया में आर्बिट्राज फंड्स है, एक्चुअली देखा जाए तो वो सही माने में एब्सोल्यूट रिटर्न है कि इक्विटी लॉन्ग किया, फ्यूचर शॉर्ट किया, पूरी साइकिल प्ले किया, आपको 5-6% जो आज के समय 5-6% जो एनुअल रिटर्न आना है वो आ रहा है उसके अंदर. नाउ लॉन्ग शॉर्ट फंड्स में क्योंकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, तो जो एब्सोल्यूट लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च करना चाह रहा है, वो कहेगा कि मैं एब्सोल्यूट आर्बिट्राज प्लस रिटर्न हूं या आर्बिट्राज प्लस प्लस हूं. उदाहरण स्वरूप, अगर आर्बिट्राज 5-6 देता तो हो सकता है मैं 6-7 दूं, आर्बिट्राज 5-6 देता तो मैं 7-8-9 दूं. नेचुरली मतलब अपसाइड डाउनसाइड दोनों एक रेंज होती है उसके अंदर कवर्ड, राइट, और भिन्न भिन्न प्रकार के उसके मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं. तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के एमएफडी को अगर पोजीशन लेनी है, उसको पहले पूछना चाहिए आप एब्सोल्यूट रिटर्न तो नहीं हो या आप डायरेक्शनल हो. क्योंकि शॉर्ट टर्म का जो पैसा है, अगर समझ लीजिए आर्बिट्राज का पैसा है, अगर मैं यहाँ तक बोलूंगा कि अगर किसी को 6-8 महीने की एफडी करनी है, उसको अगर आर्बिट्राज की तरफ जाना है, तो वो एब्सोल्यूट रिटर्न भी देख सकता है, जो कि आर्बिट्राज प्लस की तरह अपने पोजीशन कर रहे हैं. तो थोड़ी देर पहले जहां आपने पहला शुरू में प्रश्न पूछा था, तो जितना मेरे को आइडिया है, जो जो 2-3 हाइब्रिड प्रोडक्ट्स कैटेगरी लॉन्च हुई है लॉन्ग शॉर्ट में, वो एब्सोल्यूट रिटर्न साइड में है. यानी कि अपसाइड ज्यादा नहीं देंगी, वो मार्केट पार्टिसिपेशन में भाग नहीं लेंगी.
हमारा जो प्रोडक्ट है डिविनिटी इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, ये अपसाइड पार्टिसिपेशन की क्षमता रखता है। फंड मैनेजर्स रिस्क मैनेज करने, वॉलेटिलिटी मैनेज, ड्रॉडाउन मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अपसाइड में भी पार्टिसिपेशन करेंगे। सो और 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 इस प्रोडक्ट में डाउनसाइड, मतलब आपकी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में डाउनसाइड में अल्फा जनरेशन की कैपेसिटी हो सकती है, क्योंकि डाउनसाइड में अगर आप कोई स्टॉक शॉर्ट करो जो कि नॉर्मली एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं करेगा, उसको है कि अपसाइड डाउनसाइड दोनों प्रोटेक्शन करनी है, वो रेंज में काम करेगा, तो हम डाउनसाइड में भी अल्फा जनरेशन हो सकती है इन इन आर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। तो इट इज, सो यू नो, सो दो मेन स्ट्रेटेजीज है, बट शायद डायरेक्शन स्ट्रेटेजी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और रिटर्न एट लोअर वॉलेटिलिटी इरेस्पेक्टिव मार्केट डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा। हम्म। ठीक है। सो जेपी, डिविनिटी इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड को कैसे पोजीशन करना है डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन क्लाइंट्स पोर्टफोलियो? जी जी जी। डिविनिटी लॉन्ग शॉर्ट फंड को डायरेक्शनल इक्विटी पोजीशन के हिसाब से पोजीशन करना है। हम्म। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, हम हमारी हमारी हम हमारी तीनों पोजीशन रह सकती हैं। कैश पोजीशन रहेगी मार्केट, जो कि स्ट्रेटेजिक लॉन्ग कहते हैं। हम टेक्निकल कॉल्स लेंगे, एंड हम टेक्निकल लॉन्ग्स लेंगे, एंड हम हेज या शॉर्ट्स को भी यूटिलाइज करेंगे। शॉर्ट्स, लेकिन क्या ना कि ये नॉर्मली ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ है, ये भी कोई कंपल्शन नहीं है कि हमको शॉर्ट करना ही करना है। हम्म। अपॉर्चुनिटी दिखे, रिस्क दिखे, वॉलेटिलिटी का अंदाजा हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री में कोई स्ट्रक्चरल आपको कोई क्वेश्चन, कोई पोजीशन लेना चाहे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि 1.5 साल पहले, करीबन 1.5 2 साल पहले, जब कैपिटल गुड्स स्टॉक चल रहे थे, तो कई स्टॉक बहुत महंगे हो गए थे। तो हम्म। म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट नहीं कर सकते अपने माल, वो अपने स्टॉक को बेच सकते हैं लेकिन शॉर्ट नहीं कर सकते, तो हम उसको शॉर्ट कर सकते थे, प्रोवाइडेड वो एफएनओ में और लिक्विडिटी उसकी इनफ है, राइट। मैं एग्जांपल देता हूँ, कैपिटल मार्केट कुछ स्टॉक्स थे जो कि यहाँ की हम शॉर्ट कर सकते थे। इंडिया की एक बहुत ही बड़ी पेंट कंपनी है, जो कि हमको लगा कि स्ट्रक्चरली, क्योंकि कंपटीशन नहीं आ रही थी उसके अंदर, तो हो सकता है कि उसके वैल्यूएशन में इम्पैक्ट हो, उसको भी हम शॉर्ट कर सकते थे। ऐसा भी हुआ है कि हम बैंकिंग में इन्वेस्टेड हैं और वेल इन्वेस्टेड है बैंकिंग में, हमको बैंकिंग में कोई इशू नहीं लग रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी, एक बैंक जिसके अंदर की थोड़ी सी मैनेजमेंट टाइप, थोड़ी सी वॉलिटिलिटी चल रही थी, और वहां पे थोड़े कुछ कुछ इम्पैक्ट था इन टर्म्स ऑफ वन टाइम राइट ऑफ ट्रेजरी लॉसेस को लेके, तो वहां हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, तो हम वहां भी शॉर्ट हमने पोजीशंस ली। तो हम्म। आप देखोगे कि शॉर्ट पोजीशंस आपको हर मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एंड एट द सेम टाइम स्लाइडिंग मार्केट में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके अंदर, राइट। तो ओवर पीरियड टाइम ऐसा नहीं है कि हम 25% इन्वेस्टेड रहेंगे, हम जीरो भी हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमको रहना ही रहना है। तो ओवर पीरियड टाइम व्हाट विल डू, विल यू आप ये सोचिए कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये एक स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, जिसके अंदर की इक्विटी पोजीशन तो हम लेंगे, सेंस इक्विटी का ही रहेगा, लेकिन एट टाइम्स इट में सो हैपन दैट यू विल फील, अरे प्रोडक्ट में तो पोजीशन ही मतलब मार्केट से पूरे परे है। जैसे कि कोविड में हम पूरा पोर्टफोलियो हेज किया हुआ था हमने, मार्केट गिरी, हम नहीं गिरे, उल्टा हम बाद में शॉर्ट से हमारा अल्फा जनरेशन हुआ। हम्म। जैसे मैंने लास्ट ईयर कहा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। लास्ट ईयर जब अक्टूबर ऑनवर्ड अगले 5 महीने मार्केट गिरी, तो मार्केट गिरी 14-15%, निफ्टी के सेंस में, मिड कैप स्मॉल कैप 20-25%, हमारा फॉल 3%। हम्म। तो मार्केट में असोमेट्री से मार्केट में थोड़ी इरेशनैलिटी रहती है, और जब मूड बहुत अच्छा हो तब ये ज्यादा आ जाता है। तो तो ये नहीं कि हम सितंबर में हमने सारी पोजीशन ली, हम हम्म। जून जुलाई से पोजीशन लेना, कॉन्ट्रा पोजीशन लेना हमने स्टार्ट कर दिया था मार्केट में। तो बढ़ती हुई मार्केट, आप मेरे पूछ सकते हो कि ऐसी कौन सी मार्केट है जहां की हम आउट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए या कम दे पाए। हम्म। मोमेंटम मार्केट में, क्योंकि हमारा धर्म आपको हाईएस्ट रिटर्न देना नहीं है। इन हम्म। दी एंड पूरे साइकिल में मेरा रिटर्न अच्छा आ सकता है, हम्म। बेटर हो सकता है, हाईएस्ट साइड हो सकता है, लेकिन मेरा काम, हमारा लॉन्ग शॉर्ट फंड मैनेजर का काम ये नहीं है कि आप मार्केट में मोमेंटम को हरदम हक करके, या आपको हाईएस्ट रिटर्न देना है उसके ऊपर। इसलिए इन फंड्स को एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी कहते हैं, कि हम्म। आपको अपनी पोजीशन लेनी है, हम्म। मार्केट्स ना कि मार्केट बेंचमार्क देखना है, ना कि कंपटीशन देखना है। आपको अगर लगे मार्केट महंगी लग रही है, तो आप शॉर्ट बैठो, हेज बैठो, आपके ऊपर ये बात, राइट। तो
शॉर्ट्स यूज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको रिस्पॉन्सिबल यूज करेंगे। देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ डिसिप्लिन, देयर इज अ प्रोसेस टू दैट, राइट। तो ये असिमेट इसलिए इसको असिमेट्रिक रिटर्न प्रोफाइल भी कहा जाता है लॉन्ग शॉट को, हम्म, कि आपको लगेगा मार्केट बढ़ रही है, हम कम बढ़ रहे हैं, लेकिन जब मार्केट गिरी दूसरे ज्यादा गिरेंगे और हम कम गिरेंगे। और हम्म, आपको वॉरेन बफे, बोले हिंदुस्तान में लोग वॉरेन बफे को मेरे को लगता है ज्यादा कोट करते हैं, कम फॉलो करते हैं, हम्म, क्योंकि वॉरेन बफे ने तो जी ने तो साफ बोल दिया था कि हम्म, डोंट लूज मनी एंड नेवर फॉरगेट रूल नंबर वन। और हम्म, यही जेनेसिस है अपने लॉन्ग शॉर्ट फंड्स के बर्थ का, कि आप सोर्स कहाँ से आई। बहुत सारे सोर्सेस है, लेकिन उसमें से एक सोर्स ये भी है कि टेक केयर ऑफ योर कैपिटल। हम्म। ओके, सो जेपी वन फाइनल क्वेश्चन। सो बहुत सारे एमएफडीज आज भी वेट एंड वॉच मोड में है, उन्होंने एसआईएफ का लाइसेंस नहीं लिया आज भी। तो जी व्हाई शुड एमएफडीज कंसीडर डिस्ट्रीब्यूटिंग एसआईएफ अकॉर्डिंग टू यू? क्या जी जी। पॉसिबिलिटीज है उनके हाँ, लिए? निशांत, अगर कैफे म्यूचुअल आज हम्म, से 25 साल पहले मेरे को इंटरव्यू कर रहा होता, 24 25 26 साल पहले, तो ये क्वेश्चन मेरे को पूछा जाता कि म्यूचुअल फंड के अंदर 5 एग्जाम आ रहा है, हम्म, लोग तो एफडियां बेचते हैं, हम्म, एलआईसी होती तो इंश्योरेंस और कोई होता नहीं था, एलआईसी बेचते हैं, पोस्ट ऑफिस बेचते हैं, हम्म, उनको क्या जरूरत है म्यूचुअल फंड करने का। तो हमने हम मैं- हमने अपने शुरुआती दौर में ये देखा कि दैट इज फ्रॉम वेयर आवर लाइफ स्टार्टेड। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम उस जमाने से आज हम इतने आगे आगे हैं कि मार्केट इवॉल्व हो रही है। यही एमएफडीज ने पीएमएस बेचा, इन्होंने एआईएफ बेचे, राइट। तो प्रोडक्ट तो उनको पता है। हो सकता है कि लॉन्ग शॉट की उतनी प्रचार नहीं किया गया हो, लेकिन अब आगे हैं तो इसका प्रचार भी होगा। तो मेरा ये कहना होगा कि लॉन्ग शॉर्ट फंड्स आर हियर टू स्टे। ये जो 25% अनहेज पोजीशन, हेज पोजीशन है, देयर फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेटिव प्रोडक्ट है। ये एआईएफ का एक पार्ट लेके आ रहा है, कुछ कैरेक्टर लेके आ रहा है, और म्यूचुअल फंड और पीएमएस का लॉन्ग वाला एक पार्ट एक कैरेक्टर लेके आ रहा है। तो ये स्मार्ट सॉल्यूशंस, स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं। ये बैलेंसिंग एक्ट है पोर्टफोलियो में। कुछ ये किसको चैलेंज करेगा? लेट्स से एक नया प्रोडक्ट आया, किसको चैलेंज करेगा? ये चैलेंज करेगा एब्सोल्यूट रिटर्न स्ट्रेटेजी जो है, या आर्बिट्राज प्लस स्ट्रेटेजी, वो चैलेंज करेगी फिक्स डिपॉजिट्स को। वो चैलेंज हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो चैलेंज करेगी हाइब्रिड्स को, वो चैलेंज करेगी इक्विटी सेवर को, वो चैलेंज करेगी पैसिव फंड रिटर्न्स को, क्योंकि पैसिव फंड्स में डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं होता है। ईटीएफ्स में अगर आप लेते हो वो इक्विटी होती है, वो डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं करती है। जब निफ्टी गिरा 15%, वो 15 गिरे ना, हम 3 गिरे, राइट। सो ये सारे उसको चैलेंज करेंगी। तो एंड आई थिंक इक्विटी इन्वेस्टर्स को भी, अगर कोई एग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टर है उसके लिए इंश्योरेंस है पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट, अगर कंजर्वेटिव है तो उसके लिए अपसाइड है। तो बात क्या है कि नई चीज है, अवेयरनेस लानी है, बात करनी है। आज 2100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए हैं जो कि एमफी के साथ जुड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से और भी आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन की सीट्स कम मिल रही हैं। कुछ आई थिंक नया कोर्स है, तो लोग कुछ पास भी कम कर रहे हैं, परसेंटेज कम है। बट ये विल ओवरकम ऑल दिस। So over a period of time, what will happen, as people understand, they will start marketing this, and to some extent AIF and PMS में हलचल मच चुकी है। हम्म, क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इसमें एंट्री पॉइंट 10 लाख का है, 1 करोड़ भी आएंगे, 10 करोड़ भी आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एंट्री पॉइंट 1 लाख का है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर टैक्सेशन का बेनिफिट है, जो कि इक्वल टू म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड की ही एक स्कीम है, जो कि अलग प्लेटफॉर्म पे अलग डिफरेंशिएटिंग है, इसलिए ब्रांड अलग है। बट टैक्सेशन जो है इसमें इजियर है, कन्वीनियंट है। एंड इसके अंदर टैक्सेशन जो है वो, अगर अगर इक्विटी स्कीम है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल के हिसाब से 12.5% एंड सेस के साथ है, राइट, सेस या सरचार्ज के साथ है। तो आर्बिट्राज हर तरह से है, वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। मतलब जिसको आज के दिन तो इसको वुका वर्ल्ड, नए नए हमको भी श्रद्धांजलि, वुका वर्ल्ड जैसे कहते हैं, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, राइट। तो इतना कुछ फास्ट चेंज हो रहा है तो डिविनिटी का प्लेटफॉर्म क्लाइंट्स के लिए क्या देता है? इट इज गिविंग देम अ पोर्टफोलियो वेयर दे कैन स्टे इन्वेस्टेड, दे कैन विदाउट देम टेकिंग अ कॉल ऑन द मार्केट, फंड में से टेकिंग अ कॉल ऑन देयर बिहाफ। अगर उनको प्रेडिक्शन जैसे उनको आउटलुक लगे उस हिसाब से वो लॉन्ग या शॉर्ट हो जाएंगे। फंड मैनेजर उनके लिए मैनेज कर रहा है रिस्क, तो दे डोंट हैव टू मूव आउट एंड पे टैक्सेस एंड डू ऑल द कन्वीनियंट अकॉर्डिंग टू मार्केट। वरना उनकी मार्केट पे कॉल है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टू सी एन इन्वेस्टर टेंड टू बी मोर इमोशनली and react later than before to the market changes. And
हम कोशिश करेंगे कंसिस्टेंसी लाने की पोर्टफोलियो में। अपना डिसिप्लिन तो हम प्रोसेस तो फॉलो करेंगे कंसिस्टेंसी लाने के लिए। तो एमएफडी इसके लिए सिंपल सी मेरी 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 गुजारिश है कि प्रोडक्ट इनोवेट, बहुत इनोवेशन है इस प्रोडक्ट में, एक वैल्यू ऐड करता है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, एंड ये स्ट्रेंथन करेगा उनके एडवाइजरी प्रोपोजिशंस को। तो इसको राइट ऑफ मत करिए, राइट, क्योंकि देयर आर पीपल पिकिंग अप। आज 2,000 लोग हैं, कल 20,000 भी होंगे। प्लेटफॉर्म्स, वेल्थ प्लेटफॉर्म सेटअप जो ऑलरेडी हैं, दे आर लुकिंग एट इट फेवरेबली। कुछ लोग, काफी लोगों ने हमको अपना, हमारे प्रोडक्ट को अपना लिया है। बैंक्स आर लुकिंग टू सेटअप, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, तो थोड़ा समय लग जाएगा सेटअप के लिए। And at the same time, the most surprising thing, and lastly, what should encourage all of us is SIF के कारण से कई PMS, कई AIF are looking at taking mutual fund license so that they can go and utilize SIF benefits and arbitrage. Ultimately, SIF gives a space where large AUMs can be managed. कई बार large AUM management, becomes difficult in PMS and in AIF space. यहाँ पे दी, और अभी 10 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं है कि इट विल, इट मे बी हिंड्रेंस फॉर इन्वेस्टर्स टू कम इन। तो आई थिंक एज इकोनॉमी इज ग्रोइंग, सेविंग्स पूल बढ़ेगा। $4 ट्रिलियन के, हम कल 10 ट्रिलियन की तरफ हम जा रहे हैं। आज सेविंग मेरे हिसाब से अगले 10-12 साल 15-18-20 ट्रिलियन का सेविंग पूल आएगा। सो सेविंग्स का अभाव नहीं होगा। ये प्रोडक्ट रेदर प्रोपोजिशन को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, पोर्टफोलियो की हर तरह से पोजीशन के हिसाब से, कोई बहुत कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा बैलेंसिंग देना है, वो दे सकते हैं। बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस करना है, उसको वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया पोजीशनिंग हो रही है। वी आर ऑल एक्साइटेड टू मैनेज मनी इन अ डिसिप्लिन्ड एंड अ प्रोसेस ओरिएंटेड वे। So, and look forward to the MFTs community. It is a collaborative effort to bring to channelize money, and look forward to the support to the ITI house also. Great, great. So, all right, we have come to an end to this discussion. Thanks, JP, for your valuable time and inputs. Thank you, Nishant. Thank you, Cafe Mutual, for having us here and giving us opportunity to talk about our new launch of Divinity Equity Long Short. Thank you so much. All the best on your Divinity Equity Long Short Fund. And finally, I thank each one of you for being such a wonderful audience. Have a great day at work, guys. Thank you.